Hello everyone, welcome back to our lecture series of ring theory. We have discussed the first isomorphism theorem in previous two lectures. By using the first isomorphism theorem, we have proved various important statements and solved questions. इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लिखते समय या फिर स्टेटमेंट्स के प्रूफ लिखते समय हमने देखा हाउ दिस फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम इज एप्लीकेबल. ओके, जब भी हमारे पास किसी रिंग में रिंग होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड है देन वी कैन थिंक ऑफ फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम. ओके, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखा था कि किस तरीके से हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है टू अप्लाई दी फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम. ओके, in this lecture we will discuss second and third isomorphism theorem एंड यू विल बी सरप्राइज कि सेकेंड और थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स के प्रूफ लिखने में भी हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का ही यूज करने वाले हैं. ओके, तो इफ वी not all these things then we can say that the first isomorphism theorem is very important in the discussion of ring homomorphism. Okay, so let us start by writing the statement of second isomorphism theorem. And second isomorphism theorem is not only give various aspect of isomorphism but also giving the important statement or you can say results about the sum and intersection of ideals and subrings. Okay, इन सभी को हम second theorems के second isomorphism theorem के proof के बाद देखने वाले हैं. Okay, so let us start this lecture by writing the statement of the second isomorphism theorem. Let me point out second और third isomorphism theorem को अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से स्टेट किया हुआ है. ओके, किसी बुक में सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम कंसीडर किया हुआ है, बट डोंट बी कंफ्यूज्ड, हमारी रेफरेंस्ड बुक में जिस तरीके से नाम है हम उन्हीं को ही फॉलो कर रहे हैं. ओके, so this second and third isomorphism theorem are from the book Dummit and Foote and chapter 7 theorem number 8. Okay, so we are having theorem 8 and 8 का हम फर्स्ट पार्ट पहले लिखेंगे. ओके, so let R be a ring and let A be a subring and B be an ideal of R. Okay, then we have three results about the second isomorphism theorem. Let me write that we are having first second isomorphism theorem. Okay, so the statements are, first is that A plus B, this is the sum of a subring and ideal defined as A plus B, where A is coming from the subring A and B is coming from the ideal B, is a subring of R. The second statement is the intersection A and B is an ideal of the subring A. And the third, which is important one, and this is directly dealing with the isomorphism. Third is saying that when we come to the A plus B by B, okay, so this is the factoring जहां पर हम A plus B में B को आइडियल के जैसे देखेंगे, is isomorphic to A upon A intersection B. क्योंकि सेकेंड स्टेट में हम कह ही रहे हैं दैट A इंटरसेक्शन B इज एन आइडियल ऑफ A. अगर ये आइडियल है तो हम फैक्टरिंग की बात कर सकते हैं, और अगर A प्लस B एक सबरिंग है R का तो B उस केस में, क्योंकि ये आइडियल है R का, इसलिए ये A प्लस B का आइडियल होगा. ओके, A need not to be ideal. Okay, maybe A may be also ideal but this is always not true, right?
So we are going to prove each and every statement, but the important is this one. Okay, so let me write. कई बुक्स में केवल ये जो थर्ड स्टेटमेंट है इसको ही एज अ सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है. ओके, तो सबसे पहले हम इन दोनों स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, फिर हम इस स्टेटमेंट पे आएंगे. ओके, सो लेट अस हैव द प्रूफ्स. सो लेट R be a ring and A be a subring and B be an ideal of R. Okay, then we are coming to the first one, the set A plus B defined as A plus B, where A is coming from the subring A and B is coming from the ideal B. Okay, is a subring of R. ओके, इसे प्रूफ कैसे करेंगे? वी नो कि जब भी हमने सबरिंग प्रूफ करना है देन वी कैन यूज द सबरिंग टेस्ट. ओके, सो वी यूज द सबरिंग टेस्ट for this. Okay, so let x equals to a1 plus b1 and y equals to a2 plus b2 are in a plus b, where a1 and a2 are element of the subring A and b1 and b2 are element of the ideal B. ओके, अब सबरिंग टेस्ट में हमने ये शो करना होता है कि कोई भी आप आर्बिट्री दो एलिमेंट लो और उन दोनों एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वापस उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए. दैट इज दिस सेट a प्लस b मस्ट बी क्लोज्ड अंडर द सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन. ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट दैट. First of all, what about x minus y? This is same as a1 plus b1 minus a2 plus b2, and simply this will be a1 minus a2 plus b1 minus b2. Since a1 a2 are element of the subring A, तो इनका subtraction भी subring A में ही जाएगा और ये subtraction B में जाएगा, right? Which is an element of A plus B, as a1 minus a2 is an element of A and b1 minus b2 is an element of B. okay, क्योंकि A सबरिंग है और B भी प्रिसाइजली सबरिंग ही है क्योंकि हर एक आइडियल एक सबरिंग होता है. What about that product? xy is equals to a1 plus b1 time a2 plus b2. When you multiply all these things, so we will have a1 a2 plus a1 b2 plus b1 a2 plus b1 b2. We are writing all these क्योंकि a1 रिंग सब रिंग A का एलिमेंट है तो ये रिंग R का भी एलिमेंट होगा और B एक आइडियल है तो ये पर्टिकुलरली एलिमेंट B का एलिमेंट है और ये भी B का और ये भी सभी B के एलिमेंट. ओके, विच कैन बी रिटन एज a1 a2 plus a1 b2 plus b1 a2 plus b1 b2, and which is an element of A plus B. As you can see, a1 a2 is a member of A and a1 b2 plus b1 a2 plus b1 b2. क्योंकि a1 सब रिंग A का एलिमेंट है तो ये रिंग R का भी एलिमेंट होगा और रिंग R का एलिमेंट a1 है, b2 B का एलिमेंट है, B एक आइडियल है तो इस केस में ये एक आइडियल का एलिमेंट ही बनेगा. That's why we are writing this is an element of B. So this is how you can see that thus A plus B is closed under subtraction and
multiplication. Therefore, A plus B is a subring of R. Okay, this is about the proof of first statement. Now come to the second one. For the second, we need to prove that A intersection B is an ideal of A. Okay, A subring है. So since A intersection B जो set है that is containing all R belongs to R such that R is in A and R is in B. ओके इसी तरीके के रिंग के ऐसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों से बिलोंग करते हैं वो ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे. ओके अब इसको ए का आइडियल प्रूफ करने के लिए वी हैव दैट क्लियरली this A intersection B is a subset of A, right? तो अब हमें इसे आइडियल प्रूफ करने के लिए we will use the ideal test. Okay, so now we use the ideal test. Okay, so for this we are taking any two element from A intersection B. Okay, so let we have taken the x, so I'm taking that R1 belongs to A intersection B and R2 belongs to A intersection B. And the moment we are saying that R1 is an element of this intersection, इसका मतलब R1 A और B दोनों से belong कर रहा है. अगर R2 इस intersection से belong करेगा इसका मतलब R2 A और B दोनों का element. Okay, then अब अपने ये शो करना है कि आइडियल टेस्ट के लिए फर्स्ट what about R1 minus R2? Okay, since R1 is a member of A, R2 is a member of A, both are the member of A, इसका मतलब R1 minus R2 is a member of A and the same thing can be given for B also. Okay, so we can say this R1 minus R2 is a member of A intersection B as R1 minus R2 is a member of A and R1 minus R2 is a member of B. Okay, so there is nothing to prove. And second is since R1 and R2 both are element in A, then R1 R2 is a member of. Now we need to take an element from this subring A and element from this A intersection B. Okay, so let me rewrite this. So I'm saying that let R1 is a member of A intersection B and this R belongs to A. Okay, so then what we can say, what about the R1? Since R is a member of A and R1 is a member of A intersection B. Since R is a member of A, then what we can say, R is a member of the ring R also, which will implies that R1 R is a member of the ideal B. Okay, क्योंकि B क्या है, आइडियल है. ओके देन R1 क्योंकि R1 A में तो था ही और R A में है, सो वी कैन से R1 इज अ मेंबर ऑफ A एंड R, let me write this is R1. Okay, like this. Then R1 is a member of B. That will implies that R1 is a member of A intersection B. So this is how you can see that this is closed under this subtraction and this kind of multiplication. Okay, so thus we can see that A intersection B is an ideal of A. This is what we wanted to prove. Now come to the third one, which is important. कई बुक्स में केवल इसे ही एज अ सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है. Okay, so we are having that to prove that A plus B upon
that statement was A upon B is isomorphic to A upon A intersection B. We will use first isomorphism theorem here. Okay, so what we are having here, that we use first isomorphism theorem to prove this, and for this we require a ring होमोमॉर्फिज्म, राइट। हमने आइसोमॉर्फिज्म की बात की कब की है, जब हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म होता है। ओके, जस्ट रिमेम्बर दी फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ओके, इससे आप समझ पाएंगे कि हमें कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक रिंग होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। सो लेट अस हैव, सो लेट we are defining f is a function from this set, this is a, okay, from a to a plus b upon b. now look at this scenario. देखिए, हमने फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को अप्लाई करना है। ओके, बाय अप्लाइंग द फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम वी विल हैव द दिस आइसोमॉर्फिज्म। ओके, जैसे ही हम ये प्रूफ कर पाए कि f इज ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म, तो यूजिंग द फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम हम क्या लिख पाएंगे, दैट a अपॉन कर्नल ऑफ f इज आइसोमॉर्फिक टू f ऑफ a, एंड अगर ऑन टू है तो उस केस में दिस विल बी a प्लस b अपॉन b। दिस इज नथिंग बट द f ऑफ a। ओके, इन केस अगर f ऑन टू है, f अगर ऑन टू है तो उस केस में f ऑफ a विल बी इक्वल टू a प्लस b अपॉन a, राइट। अब क्योंकि हम इस स्टेटमेंट को देखें और इस स्टेटमेंट को अगर देखें तो यहाँ पर a इंटरसेक्शन b को हमने प्रूफ करना है दैट दिस a कर्नल ऑफ phi इज नथिंग बट A intersection B. This is what we wanted to prove. तो सबसे पहले हम इस F को एक on to ring homomorphism proof करेंगे, then we will apply this first isomorphism theorem और फिर show करेंगे कि ये kernel of F A intersection B ही है। Okay, so let us proceed in this direction.